चाय विद हरीपत्ती के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और चाय विद हरीपत्ती एक ऐसी सीरीज है जहां हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं और कॉन्वर्सेशन करते हैं अराउंड पर्सनल फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे एमडी और सीईओ एक इंश्योरेंस कंपनी के, जो इंश्योरेंस कंपनी की जो फाउंडेशन है वो ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है जहां पे 3 स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं। तो ये तीनों का जॉइंट वेंचर मिलके है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इन्हीं के एमडी एंड सीईओ से आज बात करेंगे मिस्टर अनुज माथुर से और देखेंगे कि उनका क्या कहना है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस का कल, आज और कल के बारे में, और वो आपको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आइए बात करते हैं मिस्टर अनुज माथुर से। Hi Anuj sir, welcome and it's good to see you in person. Hi, my pleasure to be in this discussion. Thank you, Gurleen, for giving me this opportunity. Most welcome sir. Sir, as आप जानते ही हैं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, एंड हु बेटर देन एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस आंसरिंग द क्वेश्चंस इन पर्सन। जो लोगों के जनरली क्वेश्चन होते हैं, आप अगर देखेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं, लोगों का पोर्टफोलियो लोग बनाते हैं, दे इन्वेस्ट, दे डू लॉट ऑफ अदर स्टफ आल्सो. So do they think about life insurance as a tool which is important, fundamentally important in financial independence? हम सभी को अब इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे फाइनेंशियल सेविंग्स हो। और इंश्योरेंस ही एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है वेयर यू कैन एक्चुअली गारंटी योर फ्यूचर. So once you have set the goal, then you can plan accordingly and then you can accumulate your wealth in addition to protection. So great sir. तो अगर इन शॉर्ट इसको बोलना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं जो जरूरी चीजें होती हैं वो पहले होता था रोटी कपड़ा मकान, then it was रोटी कपड़ा मकान and internet. So now it is रोटी कपड़ा मकान, internet and insurance. Yeah. Yes, absolutely. बिल्कुल ठीक आपने बोला. And जो ट्रेंड देखा गया है, usually male member of the family takes the life insurance, female members कम लेती हैं. तो आप इस पे कुछ कहना चाहोगे? आपका क्या व्यू पॉइंट है कि आगे ये चेंजेस दिखेंगे आपको? बिल्कुल दिखेंगे. देखिए, इंश्योरेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक नाउ कंसीडरिंग द जेंडर डाइवर्सिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड एंड आल्सो लाइक women being equal partner in terms of managing home as well as managing financials, I think it is very important that women should also consider, and the men counterparts should actually encourage them to take the insurance. I think it's very, very important for them as well. In fact, I'll say more important than male. अभी भी penetration of life insurance in India is quite low as compared to, अगर आप globally देखेंगे अभी कम है. तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये बढ़ेगा पेनिट्रेशन, और जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों को बढ़ रही है, they will realize the importance of life insurance और ये ट्रेंड चेंज होगा? So, Gurleen, penetration is a factor of two things. One, people's desire to buy, their affordability, and the other is availability of the right product at the right price point. So अगर हम देखें लास्ट फ्यू इयर्स में अवेयरनेस बढ़ी है, अफोर्डेबिलिटी भी हो गई है. अब कुछ एरियाज हैं जहां पे पेनिट्रेशन अभी नहीं हुआ है, मे बी बिकॉज पीपल आर नॉट दैट savvy, और कह लीजिए कि मे बी द इंश्योरेंस कंपनीज डोंट हैव दैट मच ऑफ प्रेजेंस, व्हिच इज चेंजिंग नाउ. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट आवर रेगुलेटर IRDAI has taken some concrete steps to increase the availability of insurance in those places where it is required. What are 3 things that one should keep in mind so that future may claim reject now? First of all, please answer all the questions in the form yourself. Don't leave it to the insurance agent. Number 2, in terms of financial details, financial disclosure should be right, medical disclosure should be right, and thirdly, I'll say the intent should be right. So if a customer is buying policy to meet his or her needs, then I think there's nothing to worry. So coming on to the product side, sir, because lot of people I'm sure have these questions कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, especially जो flavor of the season है, guaranteed products, FD लोग कराते हैं 6% 7% की, but lot of people are moving out of FDs and investing into guaranteed life insurance products. तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होगा guaranteed products and what is your say on this? देखिए, guaranteed plans का बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि इसमें खाली रिटर्न ही नहीं है, रिटर्न तो मिल ही रही है which is very competitive. उसके अलावा टैक्स फ्री प्रोसीड्स हैं. सो मान लीजिए एफडी में अगर आपको 6% मिल रहा है जी, और अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, सो इन अ वे नेट रिटर्न टू यू इज 4.8%, वेयर इन इंश्योरेंस इफ यू आर गेटिंग 6% टैक्स फ्री along with protection, there can't be a better proposition. So customers should buy product knowing what he's buying, and I think there the non-par products are very, very good at this point in time, where the IRRs or the return is better or as good as fixed deposits, tax free, along with protection. Many insurance companies, including our company Canara HSBC Life Insurance, we have guaranteed non-par plans where the return is as high as 6%. It ranges depending upon the age of the customer and all that.
It varies, but it is very, very competitive. Sir, if I may ask you कि अगर आप कोई life insurance product लेने जा रहे हैं, तो what are 3 things as a customer that you see in that life insurance product? So first of all, the most important part is whether the purpose is getting met or not. Number 2 comes the return along with protection. So obviously I like to buy a product which is meeting my expectation in terms of returns. And third is in terms of what my family needs are. It's a thumb rule that at least 10 times of your current income. So let's say if my current income is 10 lakhs, I should have minimum cover of 1 CR. So next है सर, हम सेक्शन 45 के बारे में बहुत सुनते हैं, मतलब ये इनफैक्ट ऑडियंस के ही क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछ रही हूँ आपसे. तो सेक्शन 45 पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि 3 साल का अगर प्रीमियम पे किया हो तो कोई आपका क्लेम कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, मतलब क्या ये सही है या इसके पीछे क्या आप अपनी कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, ओपिनियन देना चाहेंगे? So I think ये क्लॉज जो है ये कस्टमर के इंटरेस्ट में है कि जो भी इंफॉर्मेशन है इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए आप ले लीजिए फर्स्ट 3 years में, except for fraud होगा तो then obviously insurance company can actually raise questions and can also repudiate the claim. Sir, when we talk about ULIPs, so a lot of people have this perception कि ULIP safe नहीं होते हैं, तो किस सेगमेंट को ULIP एक्चुअली में खरीदना चाहिए? देखिए ULIPs जो है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है. If there's someone who doesn't want to face the volatility of the market, कि आज मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर गई है तो आपकी जो NAV है वो ऊपर चली गई, कल को 300 पॉइंट्स नीचे जाती है तो then fund value will come down. जी. But in the long term, my own experience is that equity as an asset class pays much better return compared to any other asset class. So ULIPs are not bad per se. Problem is that when a ULIP is sold to a person who has got no idea of the market, has not got zero appetite for market volatility, that is where the problem is. Otherwise, ULIP is a fantastic product. मतलब अगर नीड असेसमेंट करके और रिस्क एपेटाइट असेसमेंट करके दिया जाए तो ULIP is a great product. So next is the $1 million question. I'm sure बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे उसका. जब हम बात करते हैं adequate sum assured, आपने बताया पीछे एक थंब रूल बताया कि कितना होना चाहिए, but adequate sum assured, most of the people are under insured. ठीक है, कम इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एडिक्वेट सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए? तो मैंने जैसे बताया थंब रूल जो है, थंब रूल फॉर इंश्योरेंस इज दैट यू शुड हैव सम एश्योर्ड और कवरेज इक्विवेलेंट टू और हायर देन 10 times of your current annual income, because in future there will be inflation, the requirements will go up, so that is the minimum one should have at least. अभी जैसे आपने बोला IRDA में बहुत सारे चेंजेस हुए, तो हमने ये भी सुना लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विल आल्सो बी अलाउड टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस. So Canara HSBC इंश्योरेंस भी कुछ इसके लिए कर रहे हैं? बिल्कुल हम कर रहे हैं. We are waiting for the regulations. अभी तक ये डिस्कशन ही हुआ है इस पे. But if regulator comes up with this regulation allowing life insurance companies to also have health indemnity products, we'll be very happy to do that. By the way, हम लोगों के भी health insurance plans हैं, but वो defined benefit plans हैं. Those are not health indemnity जो typically mediclaim के तरह से जाना जाता है. तो वो products हैं जो अभी life insurance companies नहीं launch कर सकती हैं. But if the regulations allow, we'll be very happy because देखिए ultimately it's a customer need which should be met. और इसमें एक चीज और है, जब ये allow होगा तो इसमें synergies आएंगी. So we will be able to offer better proposition to the customer because we are bundling 2 products or 2 benefits. So उसका benefit भी customer को मिलेगा and it will be one-stop solution for the customer. So now quickly we just do a rapid fire round. So these are quick questions that I have framed. So first one is 3 types of life insurance policies that one must have in the portfolio. Traditional policy, if I can use the word traditional for par and non-par, ULIP and pension and annuity policy. So ये 3 categories. And what is the right age to buy term insurance? As early as you can buy. Sooner the better. So next question sir, term insurance किस एज तक आइडियल है? देखिए इसका टर्म इंश्योरेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट्स अ प्योर प्रोटेक्शन. इसमें कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती है. दिस इज मेंट ओनली फॉर द अनफोर्सीन इवेंट वेयर कस्टमर इज नॉट देयर बट द लायबिलिटीज आर देयर. तो जनरली जो हमने इंडियन इकोसिस्टम में देखा है, पर्सन इज एबल टू डिस्चार्ज ऑल हिज और हर फैमिली ऑब्लिगेशंस बाय द एज ऑफ 75 और सो. So I'll say at least वहां तक तो होना चाहिए. Sir, term insurance में आपकी preference क्या रहती है? With return of premium or without return of premium? I would suggest that one should really evaluate what is the objective, what is the purpose, and then decide. In return of premium, you will pay slightly higher premium because ultimately you're getting your money back. तो अगर हम इसमें पूछे कि ULIP और guaranteed plans में आपको choose करना हो, तो which one is your favorite? देखिए मैंने तो दोनों लिए हुए हैं because दोनों की अपनी importance है. I look at insurance for protection also. I look at insurance for financial savings also. But yes, what I have done, I kind of arrived at my overall financial goal that this is the amount I need. Partly I have taken through ULIP because there is a phrase that one should not put all eggs in one basket, right? Absolutely.
So going by that, I have got ULIP also, I've got non-par policy also, I've got term also, and I've got pension policy also. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने कौन सी पॉलिसीज होल्ड कर रहे हो एज अ सीईओ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो आपने पहले ही आंसर कर दिया कि आप सब पॉलिसीज होल्ड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए. एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये मैंने तब नहीं लिया जब मैं सीईओ बन गया इस कंपनी का. These policies I have been buying right from the age of 25. When I got into my first job, I bought my first policy then, and like that I've added. And obviously after I joined an insurance company, awareness went up, so I went ahead. But it's very important, whether you're working for insurance sector or otherwise, that you should plan your protection and financial goals. So just to summarize, sir, if you have to give 5 points to someone, regarding the conversation that we just had, कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, कुछ do's और don'ts देना चाहें एक summarize करने के लिए, so that people can take away and वो implement कर पाएं अपनी life insurance buying journey में. So पहली बात तो insurance is as important as रोटी कपड़ा मकान, so it should not be secondary, which you only said. Number 2, आप अपना इंश्योरेंस का जो बोलते हैं कि what is the adequate sum assured, वो बहुत important है. You should assess your requirements and then you should buy appropriate cover. Thirdly, please make full disclosures. अगर आपको अपनी किसी health condition का पता है, if you are aware of something, disclose. Because ऐसा नहीं है कि आपको policy issue नहीं होगी. अगर आपको कोई problem है, policy will be issued to you. Maybe premium may be slightly higher, but then at the time of claim, there will not be any problem. If you don't disclose, and then if the insurance company gets that evidence from somewhere, then it's a problem. Fourth, please share with your family members. It's an asset. Life insurance policy is an asset. Please share with your family members that this is what it is. And in case if there's a need, then please, this is what is available for your protection. Number 5, please, and this is the last one, please take care of your health. There's nothing more important than health. So while insurance policy is a backup option, when we talk of protection, but health is very important. You may get cheaper insurance also. So that's the carrot. So I think broadly, these are the 5 things which I would like to advise to the customers that this is what they should be aware of. Thank you so much for your time, sir. And I really appreciate taking out time from your, and I'm sure you have so many commitments, but you still agreed to do this. Thank you. It's my pleasure. It's my pleasure. And it's not just about the business. It's about taking care of the customers, helping people with what they need. So I'm really pleased to be part of this conversation. And thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.